So, good morning या गुड नाइट या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, इसमें से कोई भी चीज़ अभी एप्लीकेबल नहीं है. सो विदाउट ग्रीटिंग्स वी कैन सिंपली स्टार्ट. तो शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दैट विल बी द टॉपिक. टेलीग्राम लाइव और यूट्यूब लाइव में हाई यील्ड टॉपिक जो भी थे, डेंटल साइंसेस एंड बेसिक साइंसेस, ऑलमोस्ट दे आर कवर्ड. एंड थोड़े से MCQ टेक्स्ट बुक्स में से कंसेप्ट जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, दोज वी आर ऑल्सो हैविंग. सो मुझे लगता है कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के MCQs. दैट विल बी द थिंग. एंड थोड़ा सा लेट हो गया आज बेसिकली, बट दैट्स वेरी गुड. बहुत बार मिस हो जाते हैं कुछ चीज़ें. सो फिजियोलॉजी का एक ब्रोकाज एरिया पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है हर बार. सो ब्रोकाज एरिया along with other, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके, सो वेलकम एवरीबॉडी. सो ब्रोकाज एरिया, what is that? So it is a posterior part of the inferior frontal gyrus, and it is usually in the left hemisphere. और ब्रॉडबैंड्स एरिया 44 एंड 45 पे आता है वो. एंड इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच प्रोडक्शन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग and motor planning for speech. Okay, so these are the functions. और डैमेज अगर हुआ ब्रोकाज एरिया को तो व्हाट कैन हैपन? सो ब्रोकाज अफेसिया दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन फ्लुएंट एंड एफर्टफुल स्पीच विथ रिलेटिवली प्रिजर्व्ड कॉम्प्रिहेंशन. सो MCQ बस इस पे आया था. सो ब्रोकाज एरिया जो होता है वो किस चीज़ को रिलेट करता है? तो स्पीच प्रोडक्शन, लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड मोटर प्लानिंग फॉर द स्पीच. ओके, एंड अदर रिलेटेड एरियाज जो है वो, तो वर्निकीज एरिया. सो अगेन इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपेरियर टेम्पोरल गायरस, दैट इज ब्रॉडमैन एरिया 22. ओके, वाइल ब्रोकास था posterior part of the inferior frontal gyrus, और Brodmann's area 44-45, that was for Broca's. और Wernicke's area उसका फंक्शन क्या है? तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. ओके, दैट इज द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ दिस Wernicke's area. एंड डैमेज टू दिस Wernicke's aphasia क्या होता है बेसिकली? इस वो हुआ तो फ्लुएंट बट नॉन सेंसिकल स्पीच एंड इम्पेयर्ड कॉम्प्रिहेंशन. तो बहुत बार ऐसे लेट्स से इंडिविजुअल्स हम देखते हैं कि सिंपली दे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं फ्लुएंटली, बट इन नॉन सेंसिकल स्पीच उसे कहा जा सकता है, इरिलेवेंट कहा जा सकता है. ओके, तो अगर वैसा हुआ तो वर्निकीज एरिया इज डैमेज्ड. एंड अगर नॉन फ्लुएंट है एंड एफर्टफुल स्पीच है तो ब्रोकास एरिया, क्योंकि वो बेसिकली स्पीच प्रोडक्शन में काम करता है. बट ब्रोकास एरिया अच्छा है, स्पीच प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग अच्छी हो रही है, बट सिंपली कॉम्प्रिहेंशन उसमें नहीं आ रहा है लैंग्वेज का. तो कंटिन्यूस नॉन सेंसिकल स्पीच करने वाले लोग हम आजू बाजू बहुत बार देखते हैं. ओके, सो इन दैट केस वर्निकीज एरिया इज डैमेज. ओके, उसके बाद में शायद एक है एंगुलर गायरस, विच इज़ लोकेटेड ऑन द पैराइटल लोब. एंड फंक्शन होते हैं इसके इंटीग्रेटिंग विजुअल, ऑडिटरी एंड टैक्टाइल फॉर्मेशन. सो इट इज इन्वॉल्व इन द रीडिंग एंड राइटिंग विच वन एंगुलर गायरस. ओके, और उसके बाद में है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स M1. So it is located at the pre-central gyrus.
सो जैसे नाम है मोटर कॉर्टेक्स, सिंपली इट कंट्रोल्स वॉलेंटरी मूवमेंट्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मसल्स यूज्ड इन द स्पीच एज वेल. सो माउथ, टंग एंड लैरिंग्स इसको भी कंट्रोल करता है प्री सेंट्रल गायरस का प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स. ओके. एंड देर आर सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज एज वेल जो कॉम्प्लेक्स स्पीच मूवमेंट होते हैं उसको ये करते हैं. सेरेबेलम विच कंट्रोल्स फाइन कंट्रोल ऑफ द स्पीच, फाइन मोटर कंट्रोल होता है वो सेरेबेलम करता है. एंड जो रिदम होता है बेसिकली स्पीच का या स्पीच की फ्लुएंसी वो बेसल गैंग्लिया करता है. ओके. तो राइट फ्रॉम द ब्रोकाज एरिया, वर्निकेस, एंगुलर गायरस, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स एंड सप्लीमेंट्री मोटर एरियाज, दे ऑल एड इन लेट्स से लैंग्वेज. ठीक है. तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन, फ्लुएंसी, सेंसिकल है या नॉन सेंसिकल है, मोटर वाला कौन सा पार्ट है, तो वो सब चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है. ओके. तो राइट 10 MCQs विद आंसर्स ऑन द टॉपिक. ओके. तो इसके ऊपर ही यूट्यूब लाइव और टेलीग्राम लाइव के जितने भी टॉपिक्स हैं बेस्ड ऑन दोज डेली डायमंड MCQs विल बी पोस्टेड एज यूजुअल. जैसे हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं अराउंड 5 or 6 o'clock एंड एवरी आवर वी हैव अ MCQ. और आप उसको आंसर कर सकते हो. करेक्ट रिस्पॉन्सेस वहाँ पे है बेसिकली. एंड शायद येस्टरडे देयर वाज अ कन्फ्यूजन, लाइक शायद एक MCQ था रिलेटेड टू द डाइवर्जेंट फेशियल प्रोफाइल एंड द प्रोमिनेंट मैंडिबल. तो शायद उसमें टाइपोग्राफिकल एरर की वजह से ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए. तो दैट विल बी करेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल. सो आप सिंपली उसमें कमेंट कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू आर लेट्स से उसमें आप अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तो सिंपली करेक्शंस सजेशंस उसमें हम ऐड कर सकते हैं. बट देयर इज़ अ लिमिटेशन कि आप शायद 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में एक ही मैसेज कर सकते हो. आफ्टर दैट फर्स्ट मैसेज आपके करने के बाद में फॉर 50 मिनट्स यू वोंट बी एबल टू let's say comment. So that is a type of a restriction we do have at our टेलीग्राम चैनल. शायद डिस्कशंस बहुत ज़्यादा डिसोरिएंटेड होते हैं ऐसा मैंने देखा है. तो कीपिंग दैट रिस्ट्रिक्शन इट विल श्योरली हेल्प कि जो करेक्ट गाइडेड रिस्पॉन्सेस है उसके ऊपर ही हम वो करें. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द फिजियो. सो ब्लड ब्रेन बैरियर ये कवर किया है हमने, बट उसका लोकेशन मुझे नहीं लगता कि हमने ये किया. तो ब्लड ब्रेन बैरियर BBB स्पेसिफिक उसके एरियाज होते हैं. सो what is that? So blood brain barrier is a selective and semi permeable barrier that protects the brain from harmful substances, okay, in the blood while allowing only essential nutrients to pass through. Or location basically at the level of cerebral blood vessels, specifically in the capillaries supplying the brain and the spinal cord. So उसमें आता है endothelial cells of the brain capillaries which are joined by the tight junctions. Recently हमने सब junctions कवर करे थे तो उसमें ये अच्छा खासा टॉपिक कवर हुआ था कि टाइट जंक्शन, गैप जंक्शंस, ओके, एंकरिंग जंक्शंस क्या है. सो एस्ट्रोसाइट की जो एंड फीट होते हैं विच रैप अराउंड द कैपिलरीज वहाँ पे भी होता है. एंड पेरिसाइट्स एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट प्रोवाइड सपोर्ट. तो एंडोथेलियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट एंड फीट एंड पेरिसाइट्स एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ पे भी ये होते हैं. And throughout most of the brain and the spinal cord it is like located, but there are some areas where this BBB is absent or even weak. So fenestrated capillaries होती है. ठीक है. So these regions are also called as circumventricular organs which need to detect the substance in the blood. Okay. So area postrema which is a vomiting center. Pineal gland for melatonin release,
एंड मीडियन इम्यूनस लाइक हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज होता है वहाँ से, एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड सब फोर्निकल ऑर्गन और इवन ऑर्गन organum vasculosum of the lamina terminalis. So these are the areas where blood-brain barrier is weak or absent. Area postrema, pineal gland, median imminence, neurohypophysis, and subfornical organ. Okay. तो फिजियो के दो टॉपिक्स बेसिकली, एंड बोथ आर दे आर रिलेटेड टू द CNS. एंड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कंबाइंड ही है वो. सो लिम्फोसाइट्स देख लेते हैं एक बार फिर से. T lymphocytes basically. सो इनका ओरिजिन होता है बेसिकली बोन मैरो, बट मैचुरेशन साइट होती है थाइमस. सो हेंस द नेम इज टी सेल्स. ओके. एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है, सो दीज आर द की प्लेयर्स इन दैट फंक्शन. ओके. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी lymphocytes प्ले अ की रोल. So different types of T cells. So there are helper T cells, cytotoxic T cells are also there, regulatory T cells and memory T cells. Okay. So CD4, CD8 हमें पता है. तो helper T cells उनको CD4 plus कहा जाता है, which activate B cells, macrophages and cytotoxic T cells. While cytotoxic T cells, also known as CD8 plus, which destroy the virus infected and cancerous cells. Cytotoxic T cells. Okay. Regulatory T cells, basically they suppress the immune responses, and they also maintain the tolerance, while long-term immunity which is provided by the memory T cells. Okay. So helper T cells, cytotoxic T cells, regulatory T cells and memory T cells. ठीक है. After that we will be having B lymphocytes. So origin and maturation both in bone marrow, hence B for bone marrow, and function is the key role in the humoral immunity. Okay, so antibody mediated जो immunity होती है humoral, इसमें B lymphocytes they play a key role. So main types of B lymphocytes, so plasma cells and memory B cells. So plasma cells basically they produce and secrete antibodies, so that's why humoral immunity में इसका importance ज़्यादा होता है. And B lymphocytes, B cells, they're activated by the interaction of antigens with helper T cells. Okay. इसके बाद शायद पैथोलॉजी का कर लेते हैं कवर, इम्यूनिटी. So innate and also known as natural, and adaptive also known as acquired immunity. Okay.
सो डिटेल में नहीं जाने वाले, सिंपली ओवरव्यू करने वाले. सो इम्यूनिटी इज द बॉडीज एबिलिटी to resist or even eliminate potentially harmful foreign materials or abnormal cells. Okay. So types: innate or natural immunity. So it is present from the birth, and it is non-specific, and it is a rapid. Okay. The response given by the innate or natural immunity is rapid. Okay, but it's non-specific. So components of innate immunity: so skin, mucous membrane, phagocytes, NK cells, and complement system. So these are the components of innate and or natural immunity. Okay. While adaptive, also known as acquired immunity, it is totally, let's say, specific, unlike natural. It is slower but long lasting होती है. ओके. फर्स्ट वाली जो इनेट थी वो रैपिड रहती है, नॉन स्पेसिफिक. अडेप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है, स्लो होती है, बट लॉन्ग लास्टिंग होती है. एंड इट हैज़ ऑल्सो अ मेमोरी. ओके. So different types of adaptive or acquired immunity. So humoral immunity and cell mediated immunity जो हमने recently पढ़ा. Cell mediated means T cell immunity is associated, and humoral means B cells related. Okay. और एक्टिव एंड पैसिव भी होती है बेसिकली. सो एक्टिव इम्यूनिटी, what it means, so when body produces antibodies like in vaccination or infection, so that is known as active immunity. While passive, antibodies are transferred from the another source like maternal antibodies or even antibody injections. So this is an example of passive immunity. Okay. बट वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन में जो आती है वो दैट इज एक्टिव. आई होप ये जो फास्ट रैपिड रिवीजन हो रही है दैट विल जस्ट थिंक कि इसको बाद में पढ़ सकते हैं. सूचर्स कवर किया है हमने ऑलरेडी. इट्स ए बायोमेडिकल वेस्ट है, उसका भी करते हैं हम एक राइट नाउ. सो बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज. ओके. तो कभी कभी ये क्लिनिकली अप्लाइड आ जाता है एमसीक्यू. So mainly biomedical waste is categorized mainly into four color coded categories. So yellow, red, white or translucent, and last wala blue. Okay. So yellow color code किसके लिए यूज किया जाता है? So infectious and pathological waste. Okay. For example, human tissues, organs, बॉडी पार्ट्स, इवन सॉइल्ड ड्रेसिंग्स या एक्सपायर्ड मेडिसिन के लिए भी येलो वाली जो बैग है वो यूज़ की जाती है. एंड डिस्पोजल मेथड इज इंसिनरेशन और डीप बरियल. ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स, सॉइल्ड ड्रेसिंग्स येलो में डाली जाती है. वाइल रेड कंटेमिनेटेड रिसाइकलेबल वेस्ट जो होता है, like tubings, catheters, IV sets, or even gloves. Okay. White, yeah, translucent, that is used for sharp waste like needles, syringes with fixed needles and scalpels. And blue, for the glass and metallic implant waste. So broken glassware, wires या ampoules वो blue में रखे जाते हैं. Okay.
तो उसके बाद में सेक्स डिटर्मिनेशन जीन जो होता है, that we will try to have a look on. So SRY, that is sex determining a region Y. So it is located on the Y chromosome. So initiates male sex determination by triggering the development of the testes from the undifferentiated gonads, and थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, बट so if SRY is present, so testes develop male phenotype XY, and if SRY is absent, okay, even with a Y chromosome mutation, so then ovaries develop, so female phenotype even in the XY individuals with the defective SRY. And we have chromosomes. तो जेनेटिक्स पैथोलॉजी में आ जाता है बहुत बार, म्यूटेशंस में ये भी डिलीशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन. एंड बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर पोजीशन उसके टाइप्स देख लेते हैं. So basically chromosomes are thread-like structures made up of DNA and proteins, and proteins may be mainly histone. So they carry genetic information. Okay. So they are found, chromosomes, they are found in the nucleus of the eukaryotic cells. So humans, we do have 46 chromosomes, 23 pairs में होते हैं वो. So 22 pairs of autosomes, 44 total, and one pair of sex chromosomes. So females में XX and male में XY. Okay. तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है क्रोमोसोम का? सो देर इज अ सेंट्रोमियर, देर इज अ टीलोमियर एंड अ क्रोमैटिड. सो सेंट्रल रीजन known as centromere, which divides chromosome into short and long arm. So short one is P and long arm is Q. While telomere, it end cap that protects the chromosome. While chromatid, one of the two identical halves of the duplicated chromosomes. और टाइप जैसे मैंने कहा कि सेंट्रोमियर की जो भी पोजीशन होती है उसके बेसिस पे दे आर नोन एज लाइक metacentric when the centromere is in the middle, while submetacentric when it is slightly off center, while acrocentric like near the one end रहा तो, and if it's like a telocentric, so at the very end but not present in the human. So middle metacentric, slightly off center submeta, and near one end रहा तो acrocentric. Okay. टीलोमर एंड टीलोमरेज. ओके, वो चेक कर लेते हैं.
Telomeres basically, they are the repetitive DNA sequences at the ends of the chromosomes, and they basically have a function that is protection of the chromosome ends from deterioration or even fusion with the other chromosomes. So they prevent the loss of vital genetic information during DNA replications. Hence they are called as, let's say, cap होती है वो end पे, and they shorten with each cell division leading to the cellular aging. Okay, and telomerase. So it's an enzyme that adds a telomeric sequence to the ends of the chromosomes. So they are active. Telomerase active होता है stem cells में, germ cells में, and cancer cells में, which are abnormally activated. So function telomerase का, it basically maintains telomere length, so allowing the continuous division, and they are made up of protein component that is TERT and a RNA template. So कैंसर सेल्स में बेसिकली इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है टीलोमरेज की. सो लेट्स सी बाकी के कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं अभी. सो डेंटल मटेरियल्स के भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं. आई एम जस्ट चेकिंग आउट our टेलीग्राम चैनल, आप भी उस पर जा सकते हैं. और एक
सिंपली सर्च का ऑप्शन है वहाँ पे, तो स्लाइड पे जो हम बेसिकली ये करते थे डिस्कशन, तो शायद उसमें से एक ट्राइगेमिनल नर्व भी काफ़ी अच्छी है।